बस ठीक है, go live. Okay. Thank you. I'm so sorry. Okay. Allah Hafiz. जब जाके वो करो. Assalamualaikum. I hope you all are well. Just a second, I'm just setting this up, and just give me a minute. I hope you all are well. Just a second, I'm just setting this up, and just give me a minute. All right, so let's start with the papers, I think. Can everybody hear me? I can't see the chat here. I'm so sorry I'm late, but this is my first time, so you'll have to just bear with me. See, let me just share. Setting this up, and just give me a minute. How's your preparation for the paper coming along, and how's your AS chemistry coming along? Anyone? Sorry about the delayed. I think you can all hear me. I just want to know that if you guys have any questions, we can just start with that. I'm just connecting my screens and all that. I've been struggling with the YouTube since almost, I think, an hour or so, something of that sort. Execute.
अच्छा जी, so we are going to start off with 2023 के papers, ठीक है? And let's talk about, you could say, the issues in 2023's papers as well. And let's look into what are the issues we are facing in 2023 के paper में, ठीक है? And let's start with that. अच्छा जी, when we talk about 2023 का paper, 2023 का paper was not that, you could say, hard, or you can call it hard as well. I don't know. I am very immature here, so just bear with me, guys. Can you all see my screen? I think there is some lag which is there as well. Can you all see my screen, guys? All right, so let's start with the papers, I think. Can everybody hear me? I can see the chat button here. I'm so sorry I'm late, but it was my first time, so you'll have to just bear with me. All right, so everybody can see the screen. How do I know if you can see the screen or not? Let me just how's your preparation for the paper coming along, and how's your AS chemistry coming along? Anyone? How do I know if you guys are able to see what I'm trying to show you guys? That is a question for me as well. Sorry about the delayed. I think you can all hear me. I just want to know that if you guys have any questions, we can just start with that. I'm just connecting my screens and all that. I've been struggling with the YouTube since almost, I think, an hour or so, something of that sort. I'm hoping you can all see my screen though. So we're going to start off with 2023 papers, okay? And let's talk about, you could say, the issues in 2023's papers. As well. And let's look into what are the issues we are facing in 2023 के paper में, ठीक है? Okay. Can anybody tell me that if you guys are able to see, when we talk about 2023 का paper, 2023 का paper was not that, you could say, hard, or you can call it hard as well. I don't know. I am very immature here, so just bear with me, guys. अच्छा जी, can you all hear me? Like I don't know if you my screen, if you can see my screen or not. So the first MCQ is the screen should be visible, but there is some lag which is there as well. Can you all see my screen, guys?
You can see the chat button here. It's so fine and late or first time, so you'll have to just stay on me. All right, so everybody can see the screen. How do I know if you can see the screen or not? How the preparation for the how the preparation for the paper coming along that from your I think I'll have to connect to the other device. How do I know if you guys are able to see what I'm trying to show you guys? That is a question for me as well. Acha ji, so the first question which is there is that bromine is reacting with. Start with I think I should have experimented before. Okay, so we have bromine, which is reacting with aqueous sodium hydroxide at 25 degrees Celsius. I'm hoping you can all see my screen. So we are going to start off with 20 papers. Okay. There is so much. Let's talk about, I would say, the issue in 2023 paper. Find some numbers. And let's look into what are the issues we are facing in 2023 deliverable. Okay. Can anybody tell me that if you guys are able to see when we talk about 2023 का paper, 2023 का paper was not. So we have bromine, which is reacting with aqueous sodium hydroxide at 25 degrees Celsius. This is the reaction number 1. Okay, so in this case, what is happening here is that I'm lagging. Yeah, let's see what I'm lagging. So we have bromine, which is reacting with aqueous sodium hydroxide at 25 degrees Celsius. Reaction 1, we have bromine and sodium hydroxide, which is forming NaBr plus NaOBr plus H2O. In reaction 2, we have NaOBr, which is forming NaBr plus NaBrO3, which reaction is the disproportionation reaction. Now, when I talk about the disproportionation reaction, these are the reactions which are going to oxidize and reduce, and the same species is going to oxidize and reduce. So if you look at the first option, so we have bromine, which is the oxidation state of bromine is 0. Then we have NaOH. Na is going to be positive 1, and OH, oxygen is -2, hydrogen is +1. In the product, we have Na plus and we have Br minus in this case. And then we have NaOBr, in this case, plus H2O. So can we quickly find what is the oxidation state of NaOBr? Na is +1, and we have to find out what is bromine in this state. Okay, so let's look that up कि NaOBr के अंदर हमारे पास bromine की क्या oxidation state आ रही है. Then we have NaOBr. I think oxygen is -2 and Br is -1 in this case. -2, -1 नहीं. इसके अंदर हमारे पास, and we have to calculate the NaBrO3 की oxidation state, and you all know how to calculate the oxidation state as well. Just give me a second. यहाँ से sharing हो रही है. Just give me a second. I have
which I could use. A lot of experimentations are going on today, guys. Sorry about that. So when I look into this one here, okay. So we have bromine, which is 0. We have sodium, which is +1. Oxygen is -1, and hydrogen is +1 in this case. Okay. यहाँ पे plus, this is minus. We have Na is +1. I want to find the oxidation state of oxygen, and bromine is -1. Let's suppose this is X. So if this is X, what I do is that I'm going to have +1 plus X plus -1 equals to 0. So +1 and -1 equals to, so I think ये -2 हो जाएगा हमारे पास. यहाँ जाके this is going to be a +1, 0 हो जाएगा, I think, in this case. अच्छा, NaBrO3 के अंदर when I look at into the state for this one, NaBrO3 के अंदर, हाँ जी. This is not how I wanted to have the class. Okay, so in this case, when we found out this is +1, this is -1 for bromine. Let's suppose bromine is X, and oxidation state is -2 multiplied by 3 equals to 0. So this is going to be a -6 plus X plus 1 equals to 0. So this is going to be a +5 in this case. ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन हमारा -1 था और यहाँ पे हमारे पास +5 हो गया. So what has happened is that the same species, initially bromine here was 0. In this case, it's -1 and then it is +5. It is -1 here as well. Okay. So which reaction is the disproportionation? So both reaction 1 and reaction 2 will be considered as the disproportionation reaction in this case. Okay. Okay, moving to the next MCQ. If I move to the next MCQ here. Okay, so this is a very confusing MCQ for the masses, or many people were confused about this MCQ. And why were they confused? Let's look into that and let's talk about why they were confused about this MCQ. It's a simple question where we're talking about the ionization energy. But when we talk about the ionization energy, what's happening here is कि हमारे पास दो चीजें यहाँ पर. When I talk about the ionization in this case, so आपको पता है कि when there is a jump from one shell to the other, so there is going to be a huge energy gap which is going to be there. So first, they're given period 3 of the element, and the element is E, in which group of the periodic table is E belonging to. Now, if you look at group number, ionization energy difference for between your, you could say, your group 5th and 6th ionization energy. So there is just a difference of 4,000. And if you look at this again, there is a difference of 4,000 as well.
And here again, the difference is around 5,000, which is not a very prominent, you could say, change as well. So in which group of the periodic table is this element belonging to? So this is belonging to group number 4th. Although they have not given us the 4th ionization energy, the element in question is going to be, because it can't be 5th, it can't be 6th, and it can't be 7th. Looking at the table which is given to us. So the only option we are left with is going to be this. In A-level question, there are going to be sometimes the options which you won't see कि अच्छा इसका कोई relevant data they have not given us, but that is going to be the option in this case. Okay? So you have to look into that as well. Achha ji. Let's move to the next MCQ. Sorry, I'll have to keep on, moving forward. Achha ji. Next MCQ is about calculation. Challenge. Let's do the calculation. In this question, you should assume that the gas formed behave as an ideal gas. Now, I hope that you all know what are the ideal gas and how do ideal gas behaves. So we have 1.7 gram sample of magnesium, which is reacting with 50 centimeter cube of 2.2 mole per dm cube HCl at 303 Kelvin and this many pascals. Which volume of gas measured under these conditions? Now, this is a question which you guys have done in your O levels as well. They're simply given two things. They've given you the data for magnesium as well, and they've given you the data for HCl as well. So the first step is going to be that you're going to find what is a limiting reactant in this case. Okay. So pehli cheez which we are going to look at is that which one is a limiting reactant. So let's find the moles. So we have 50 centimeter cube of 2.2 mole per dm cube HCl. And when I plug these into the calculators, what do I get? Sorry. So we have 50 divided by 1,000. That's 0.05 to 0.2. So the moles of HCl I'm getting here is 0.11. Okay? You know the formula C is equal to N over V. Okay? So that formula is going to be applied. So we have 2.2 multiplied by 50 divided by 1,000. We get 0.11 moles of HCl in this case. When I talk about 1.7 grams of magnesium, let's write the equation first. So magnesium plus HCl is going to form magnesium chloride plus H2. And in order to balance this equation, we will have to place a 2 here. Okay, we'll have to place a 2 here. And if you look at the mole ratio now, so the mole ratio for magnesium to hydrogen becomes 1:2. We have just found the moles of HCl, but we are not talking about the limiting reactant yet. But looking at 1.7 grams, we have the magnesium. We can find the moles of magnesium. Okay, so magnesium is 24 point something in the periodic table. So 1.7 divided by 24 is going to give me 0.0708. So I'm going to do 0.071. These are the moles of magnesium which I found. Then when I wrote the balanced equation, you can see that from the balanced equation, the mole ratio is 1:2. That means हमारे पास HCl के और magnesium में से what is the limiting reactant now? Let's look into that. What should be the limiting reactant? And when I talk about the limiting reactant, you guys know, okay, I can use either these moles or I can use these moles, either of these. Okay? That means कि अब अगर मैं, let's suppose मैं magnesium के moles लेती हूँ, I have 0.071 moles of magnesium. I would need twice the moles for HCl. So, and when I multiply this moles with I'm getting 0.14. I should need this much for this many moles of magnesium. Okay? Do I have this many moles? Do I have this many moles? No, I don't have this many moles. That means HCl is going to be my limiting reactant. And you guys know whenever there is a question of limiting reactant, we use the moles of the limiting reactant. Okay? So that means that we are going to be using 0.11 moles of HCl for further calculation, in which we have to find the volume of gas. So we will be using the moles of HCl to find the moles and then the volume of HCl. So that means if you look at the mole ratio again, mole ratio between what and what? HCl and H2. That is 2:1. That means if HCl moles are 0.11, the moles of H2 gas is going to be 0.11 divided by 2. That is going to be 0.055. Okay, so that's going to be 0.055 moles of
HCl in this case, sorry, H2 in this case. And you know that if we have the moles and we can simply multiply it with 24, so we get 1.32 as the answer. Okay, the answer is 1.32. So I'm just going to repeat what I did. So in this question, firstly, because we were given the mass as well as the moles, mass as well as the volume and concentration for HCl. First step was that we have to find the moles of each reactant. Then we wrote the balanced equation. We found the mole ratios, and then we used the limiting reactant concept and applied that to this one. Okay, we applied the limiting reactant concept and we said that, acha, what is the limiting reactant? Because if I've used magnesium, for instance, if I would have used moles of magnesium, my answer would have been incorrect in that case. Okay, I hope this is clear to everybody. Let's move to the next MCQ. I will have to keep on deleting it because this scrolls down. But I promise in my next YouTube, I will be more equipped and I will be more alert. So these kinds of, setbacks are not there. Please bear with me and, pardon me for, not a very good YouTube. I know that you guys are used to having really up-to-date YouTubes and all that, but give your new person a chance as well. Challenging. Let's move to the next MCQ. I know that most of you guys struggle in your what do you call that, organic MCQs. So I have incorporated a lot of organic MCQs because of that reason. So we are on MCQ number 24. Acha, whenever the question comes for the isomers, you will have to try to make the maximum isomers you can. I know this is time consuming. So you can make as many as you can without wasting the time. And then you can, come back and then you can see कि अच्छा इसके और कोई बन रहे या नहीं बन रहे, because I know that these questions are going to be time consuming as well. So please try कि आपका time भी बच जाए and you're not suffering in that case. ठीक है? चलें जी, let's move to the MCQ number 24. 24 it is. Yes, 24. Achha. So this question, I was just looking at this question has been repeated as well. The same question is repeated in June 2017, E13. Okay. And the values are not even changed. So this is an important question because you don't usually find the questions which are too much repeated in the papers. Okay. Challenge. We have to find structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering the question. But they have, because when you talk about structure isomers, when you talk about stereoisomers, you know that there are so many isomers which are there. So how do you, you could say, squeeze them into a smaller area? कि structures के अंदर और stereo में हमारे पास इतने सारे isomers आ जाते हैं. So if a molecule contain two non-identical carbon atoms, 4 optical isomers exist. Okay, it takes a minute to digest the answer questions. So if a molecule contains 2 identical chiral carbon atoms, अच्छा, अगर हमारे पास 2 non-identical chiral carbon centers हो ना, what are chiral carbon centers? Chiral carbon centers are the carbons which have attached 4 different groups with them. Okay. How many isomers are there? Now, I know when I talk about stereoisomerism, when I talk about the structural isomerism, you have studied 5 to 6 types of that. We have chain, we have function group, we have position isomers, we have cis trans, and we have another one which I have forgotten as well. Okay, so but they have summarized the question for you guys. They have summarized the question by giving you the pointers. We have to stick to molecular formula C7H14O. And we need to have a 5-membered ring, and we need to have a tertiary alcohol group. That means carbon is going to have 3 methyl groups, and we are going to have 1 alcohol, which is going to be an OH group, which is going to be attached. And because they have told us what function group is there, so we don't have to really worry about it. Start off by making a 5-carbon ring first. Pentagon, so I think sabko banana aata hai, right? So we can start off by making a 5-membered ring just like that. Okay? And I have to adjust this 5-membered ring in a way that I'm going to have the formula C7. So each corner represents 1 hydrogen, or abhi is tarike se it's going to be a CH2. Okay? Now I have C7. So I need to have 2 more methyl groups which I can attach here somewhere. And
if a molecule contains two non-identical chiral carbon atoms, four optical isomers exist. Okay, how many isomers are there? Okay, so अगर दो non-identical chiral centers हों तो हमारे पास four optical isomers बनेंगे. Okay. So I can attach, because there is no numbering here, so I can attach, for instance, CH3 on this one, and it's a tertiary alcohol. So CH3 एक attach कर दिया और एक मैंने OH attach कर दिया और एक CH3 मैंने यहाँ पे attach कर दिया. Sorry. एक CH3 मैंने यहाँ पे attach कर दिया. ठीक है, when I do that, you can see that by doing this, this becomes a chiral center and this becomes a chiral center. ठीक है, दो chiral नॉन आइडेंटिकल chiral centers बन गए ना, सेम तो नहीं बने. सो दो नॉन आइडेंटिकल के फोर ऑप्टिकल आइसोमर्स, टू नॉन आइडेंटिकल फोर ऑप्टिकल, तो इसके चार आइसोमर्स बन गए, इसके दो इसके दो. ठीक है, they did not ask us to make those or we would have been stuck. Now let's suppose that this is position number 1 of carbon, this is position number 2. Okay, I can now, because I cannot move the CH3OH group here because this needs to be a tertiary alcohol. They have said that I cannot move the 5-membered ring or open the ring anyway. But what I can do is that I can move the CH3 on position number 2, and let's see how that works as well. So this is CH3, this is going to be OH, and this is going to be a CH3 again. If I do this, does that make a chiral center? तो CH3OH वाला group तो मेरा chiral है. And when I talk about the CH3 वाला group, that looks like that it can be my chiral as well. क्योंकि अगर आप लेफ्ट और राइट पे देखो तो हमारे पास दोनों साइडों पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं. सो यस, आई कैन कॉल इट एज द chiral. तो ये भी chiral हो गया मेरा. लेट मी जस्ट सर्कल दीस टू ग्रुप्स एज वेल. सो मेरा ये भी chiral हो गया कार्बन, ये भी chiral हो गया, और इसके भी मेरे पास चार आ गया. आई आस्क यू टू ट्राई टू मेक मैक्सिमम ऑफ इट. तो हमने ट्राई तो इसका 13 करना है, लेकिन लेट्स सी इफ आई कैन मेक. नाउ यू नो दैट आई हैव टू carbon atoms which are outside the ring, and because the carbon number is C7, so what I can do is that I can maybe use an ethyl group maybe. Yeah. Yeah, I can use an ethyl group. Sure, I could do that. So let's use the same green color and let's move it here. So yes, CH3, I can have CH3, CH2, which is your ethyl group, and OH group because it's a tertiary alcohol. Okay, again, now this is going to make 1. So 8, ये आपका एक आइसोमर बना है ना इसका, तो क्योंकि एक इसमें ये है एक chiral center है तो एक आइसोमर बना है इसका. So the total number of isomers 4 from here, 4 from here, and 1 from here. So 9 total isomers over 13 नहीं बन रहे इसके हमारे पास. ठीक है, so the answer is going to be C in this case. I think I need to turn on the light as well. Yeah, I think this is much better. Now let's talk about next MCQ. Sorry. Next MCQ is about, let's erase these things first. Okay, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. A set of isomeric hydrocarbon all contain 4.3% by mass of hydrogen, all react with bromine by addition, and we have 0.28 grams of each hydrocarbon reacting with 0.799 grams of bromine. What is the maximum number of isomeric hydrocarbons in the set? Now, when that happens with me as well. When I read you know, a question like that, and I'm like, acha, kya keh raha hai? And then I'm lost for a minute, and then I'm like, oh, acha, I have to read the question again. So it's totally okay. That happens with me as well because I'm not paying attention probably. So that totally happens as well. Acha, the structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. A set of isomeric hydrocarbon all contain 4.3% by mass of hydrogen, all reacts with bromine by addition. Acha, ye wo wala question hai. ठीक.
And what we have to find is what is the maximum number of isomeric compounds in the set. Chale, let's try for this one. This is a kind of long question. अच्छा जी, तो हमारे पास ब्रोमीन दिया हुआ इन्होंने. ब्रोमीन हमारे पास दिया हुआ है. Okay, so they have said कि हमारे पास structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. So when I talk about the structure and stereoisomerism, how should we use these isomers in this case? Sorry about the adjusting. Achha. So when I talk about, sorry, my pen keeps going out of the screen. Okay, so we have 14.3% mass of hydrogen. Yeah, 14.3% mass of hydrogen, and because it's a hydrocarbon, so अगर मैं 100 में से उसको subtract करूँ, 100 minus 14.3, I'm going to get the percentage of carbon, and when I subtract it, I get 85.7%, and I can find the empirical formula of this hydrocarbon. Okay, I can find the empirical formula. So I have carbon ratio hydrogen. Carbon is 85.7. And hydrogen here is 14.3. This is 1, and carbon is going to be 12. Okay? And when I find the moles of this, trying to find the moles, sorry. So 85.7 divided by 12, this gives me 7.14, and ratio 14.3 divided by 7.14 over 7.14. So this is 1:2, I think. So the empirical formula of this compound is going to be CH2 in this case. Yes. Empirical formula हमारे पास बन गया CH2. Now they have given us कि हमारे पास all reacts with bromine by addition. Now, when we talk about the addition reaction, that means carbon double bond carbon भी present होगा, because addition reaction और किसी में नहीं हो सकता. And we have 0.28 grams of each hydrocarbon reacts with 0.799 grams of bromine. So I can use 0.799 grams of bromine to find the MR of bromine. The moles of bromine. 0.799 of bromine I can use to find the moles. Bromine, I think, is 81.799 divided by 80. 79.98, yes. Okay, 79.9 divided by, yeah, 80 भी कर सकते हैं. 80 times 2. 0.799 divided by times 2. So that comes out to be 4.99, और अगर हम 79.9 लेते हैं times 2, that comes out to be 159.8.799 divided by the answer. Yes. So अगर मैं 80, I think periodic table में it is, you have to look at the exact AR of bromine. I think that is 79.9, and because it's diatomic, so I'm going to be multiplying with the 2. I'm going to get 5 into 10 raised to power minus 3 here. Okay, this is the moles of bromine which are reacting with this compound. Okay, these are the moles of bromine which are reacting. Now I have the moles, and they said that it is completely reacting. All reacts with bromine by addition, and we have 0.28 grams of each hydrocarbon reacting with this. That means कि अगर मेरे पास 5.5 into 10 raised by minus 3 bromine के साथ react कर रहा है, तो मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन के मोल्स होंगे वो भी इतने ही होंगे. ठीक है, मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन के मोल्स हैं वो भी इतने ही होंगे, बिकॉज उसने कहा कि पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है. सो आई कैन यूज दीज mass, and I have the moles to find the MR of the hydrocarbon. ठीक है, so MR क्या आ रहा है मेरे पास?
So MR is going to be 0.28 divided by number of moles, 5 into 10 raised to power minus 3. And when I plug that in, that is 0.28 divided by 5 into 10 raised to power minus 3. What I get is 56 as the MR of the compound. Okay, I get 56 as the MR of the compound. और अगर मैं 56 लेके जाती हूँ and I can hit and try and check कि isomeric compound, maximum number of isomeric compound in this set. अच्छा जी 58 addition के साथ और मेरे पास जो empirical formula था वो CH2 था. So if I use light went. Okay. So if I use carbon number अगर मैं क्योंकि double bond है तो I can start with propene and butene. So if I check C4H8 or I can check CH2, carbon is 12 times 12 times 4 plus 8. 56, yes. Okay, now next step is going to be, उसने मुझे कहा है कि यहाँ पर MR मेरे पास 56 आ रहा है and because we have carbon double bond. अब मीथीन तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या हमारे पास इथीन है या हमारे पास क्या कहते हैं प्रोपीन है या ब्यूटीन है. सो यू कैन हिट एंड ट्रायल एंड चेक. सो व्हेन यू डू दैट तो आपके पास जो ब्यूटीन है, ठीक है, और उसके 4 आइसोमर भी बन रहे हैं हमारे पास. और अगर आप ये फॉर्मूला लगाओ CH2 multiply by 2 you get C4H8 as well, and the MR of this compound adds to be 56 as well. थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने फिराने वाला था बिकॉज मोल के क्वेश्चन डायरेक्ट तो आते नहीं है, यू ऑल नो दैट. ठीक है, सो आइसोमेरिक कंपाउंड्स कितने हो गए? 4 है इसके. ठीक है, लेट्स ट्राई डूइंग अनदर MCQ. अच्छा जी, I hope you guys are clear on SN1 and SN2 mechanisms and how do SN1 and SN2 mechanisms work out as well. जब हम SN1 की बात करते हैं और हम जब SN2 की बात करते हैं, how do these works as well? Because I think most of you guys get confused about what is SN1 and what is SN2 as well. So let me just give you SN1 और SN2 की एक कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ, which is probably going to help you understand the SN1, SN2 mechanisms in probably a better way. या वो होता है ना कि कोई example ऐसी होती है which just sets in your head. Just let me just turn on the light. I think the light is gone or something. Okay, I'm back. Okay, when I talk about the SN1 and SN2 mechanism, how do these mechanisms work is the next MCQ is basically about the SN1 and SN2 mechanism. Achha, let's scroll the screen downwards before we move to the next MCQ. अच्छा जी, now when I talk about the SN1 and SN2 mechanism, तो हमारे पास किधर गया, कौन सा क्वेश्चन 31 कर रहे थे. Let me just scroll my screen. Sorry guys, I am really sorry. This is my first time on YouTube, so I was a little too immature for that. So just bear with me, okay? But rest assured, I hope that this helps in your paper as well. Achha, when we talk about SN1 and SN2, SN1 में और SN2 में, I hope that you guys don't have a problem because they often ask you the question of SN1 and SN2. Now, when I talk about SN2, ठीक है, जब हमारे पास 2 स्टेप, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट, सो मुझे अजीबोगरीब किस्म की ना कहानियां याद आ रही थी टू पुट देम इन वर्ड्स और टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट. बट लेट मी जस्ट नॉट टेल यू दो स्टोरीज, लेट्स सेव देम फॉर द सेशन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, जो हमारे पास SN1 है ये हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, और जो हमारे पास SN1 is 2 step and SN2 is 1 step mechanism.
उल्टा है, ठीक है ना, which often gets the student confused. जो SN2 है उसमें हमारे पास एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे इजेक्ट कर जाते हैं. SN1 में हमारे पास एक मॉलिक्यूल पहले निकलता है फिर दूसरा जाके अटैच हो, ठीक है. So if I give you a good example of this, I can't resist. It's coming from the inside. But now when I talk about the SN1 mechanism, so just imagine that I usually give friendship examples, which are which holds very true most of the time as well. So when I talk about SN1 mechanism, for instance, you're friend with two people, okay, and then what happens is when I talk about two people, so you have you could say you're friends with two people, and एक के साथ bond कमजोर हो रहा है और दूसरे के साथ भी कमजोर हो रहा है, ठीक है, for whatever reason, ठीक है, कमजोर हो रहा है, and both of them has departed. That's your SN2 mechanism. अब SN1 के अंदर क्या है कि एक बंदा निकल गया है, उसकी जगह दूसरा आके बैठ गया, 2 steps, ठीक है, वो 2 steps और इस तरीके से पहले एक निकला है तो दूसरा आके अटैच हुआ है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है और वो वाली चीजें भी आ जाती हैं जो कि हिंड्रेंस कॉज करती हैं उसकी अटैक के ऊपर, ठीक है. अच्छा जी, when we talk about the question now, so which statement describes what happens when 2-chloro-2-methylpropane is warmed with NaOH? 2-chloro-2-methylpropane is warmed. Let's make 2-chloro-2-methylpropane first. Organic के अंदर, I think you guys are okay with the naming now. So we have propane 1, 2, and 3, and we have 2-methyl, and we have a 2-chloro as well. So एक chlorine लगा हुआ है और एक यहाँ पे methyl लगा हुआ है. So basically it's a tertiary haloalkane if you look at this. ठीक है, ये भी methyl है, ये भी methyl है, ये भी methyl. So 2-chloro-2-methylpropane is warmed with NaOH. अब जब NaOH के साथ इसको हमने warm किया तो अब क्या होना है, ये OH में जाके अटैच करना है, ठीक है ना. So what's going to happen is that how is that going to happen is the secondary halogenoalkane react with a mixture of an SN1 and SN2 mechanism. Secondary, this is not, अच्छा, अगर आपने ये compound बना लिया है, if you have made this compound तो आपकी option A और B तो निकल जाती है, because you can see एक ये alkyl group लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है. So this is going to be no way a secondary. This is going to be a tertiary. So either C or D. So you can always work by the elimination method as well. So this is going to be a tertiary haloalkane in this case. Okay? And this is going to react with SN1 mechanism. Okay? So this is how you can squeeze or summarize your answer as well. Azan is happening as well. I'll give you a minute break because I have to go and say namaz as well. लेकिन अभी नहीं, 5-7 मिनट तक. अच्छा जी, let's move to the next MCQ. हाँ जी, मैंने जान के इतने खौफनाक से MCQs डाले ताकि you can get around with these MCQs. अब इस तरह स्ट्रोक से देखिए पहले तो हम डर जाते हैं ना. That is the most common occurrence and most common reaction as well. कि हाँ ये कैसे होगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी. Let's break it out. अच्छा जी, we have 2 samples of compound X. They were treated separately with different reagent, which were added in excess in this case. We have bromine, which is so next MCQ in this case is this one. And when I talk about, let's figure out the function groups first. So we have 2 samples of compound X, which were treated separately with different reagents, which were added in excess. The products of these 2 reactions are shown. So we have a hydroxyl group, we have aldehyde, we have a ketone group, and we have an aldehyde group.
क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे लगा होता है, ठीक है, और कीटोन हमेशा सेंटर पे लगा होता है। और मुझको ये भी एक कीटोन नजर आ रहा है, सो आई एम जस्ट लेबलिंग इट के, एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, OH, OH, OH. अच्छा जी. Two samples of compound X were treated separately with different reagents which were added in excess. The products of these two reactions are shown. Which reagent should be used in reaction 1 and 2? अच्छा जी. सो कीटोन हमारे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है, ये वाले की ऑक्सीडेशन हो गई है, और यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ हमने कुछ किया है कि हमारे पास कीटोन अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला अल्कोहल वैसे ही रहा है, सॉरी ये वाला अल्कोहल वैसे ही रहा है, सेकंड वाला जो कीटोन था वो अल्कोहल में चेंज हो गया है, और जो हमारे पास एल्डिहाइड था वो भी अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि आपको पता है कि हमारे पास जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, सो वी आर गोइंग टू यूज सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, और हमारे पास जो CHO ग्रुप है यहाँ पे, दिस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे आई नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज गोइंग टू चेंज योर कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस वन एंड दिस वन, टू योर अल्कोहल्स, ठीक है। उसके अंदर उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाया, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल इज गोइंग टू गिव अस दी sorry, oxidation of ketone and aldehyde is going to give us alcohol and alcohol in this case, ठीक है। So we are going to use tolerance reagent followed by, because we need a reducing agent for this step, so this is going to be option number D. The Markovnikov rule पे भी काफी MCQs आए हुए हैं, so you need to look into those as well, कि जो Markovnikov rule पे questions आए हुए हैं। I thought to incorporate एक दो सालों के और papers, लेकिन I was stuck in setting up the YouTube, so sorry about that, लेकिन I hope these helps you out. Okay, there are two naturally occurring isotopes of bromine. One isotope has 44 neutrons, the other isotope has 46 neutrons. Ignoring fragments, how many peaks are there in mass spectrum of tribromoethane? Acha ji. So what we have to look at is peak of this one. So हमारे पास ये वो जो mass spectrometry का question है, the same question is here as well. Naturally occurring isotope of bromine, और ब्रोमीन के मेरे पास दो आइसोटोप्स हैं, उनकी परसेंटेज अबंडेंस सेम है, और मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ब्रोमीन के वो 3 बन रहे हैं, राइट। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास ओ लेवल्स में भी आया हुआ था। व्हाट दे आर आस्किंग इज टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हमारे पास जो ब्रोमीन है, एंड यू नो दैट ब्रोमीन इज कमिंग अप विद टू नेचुरली occurring isotopes, bromine 79 and bromine 81, we have 3 bromines. What are the different combinations we are going to make out of it, ठीक है। different combination जब बनाने हैं, let's use a blue color here, that means कि मेरे पास जो CH Br3 है, और उसने मुझे कार्बन बता दिया that carbon is 12, हाइड्रोजन is 1। अब ये जो Br3 है, उसने कहा है one isotope has 44 neutrons, the other isotope has 46 neutrons, ठीक है। एंड वी हैव टू नेचुरली occurring isotopes of bromine, ठीक है, यानी कि मैं तीनों की तीनों ब्रोमीन 79 ले लूं, सो 79, 79 एंड 79, दैट इज माय वन कॉम्बिनेशन, प्लस 12 फॉर कार्बन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। Second combination is going to be 12 plus 1, plus I can use 2 of 79s, because I have a total of, or I have possible positions for bromine are going to be 3 in this case, ठीक है ना। तो I can also use 2 79s and 181, ठीक है। तीसरा जो मैं ले सकती हूँ, I can use 12, 1, I can use 179 and 281s, एंड लास्टली जो मैं चौथा ले सकती हूँ, मैं इसमें 12, 1 प्लस आई कैन यूज 81 times 3, जो मैंने फर्स्ट के साथ किया था, सो दैट्स गोइंग टू मेक 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस,
ठीक है, यू माइट रिमेंबर वाटर के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी ऐसे एमसीक्यू आया हुआ है, CH3 ओ लेवल्स के अंदर इस तरह का एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इट. मैथ स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, बट थोड़े से उसको देखना पड़ेगा. ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में समटाइम्स यू गेट स्टक फॉर श्योर. अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी. चलिए, let's do one MCQ and then let's have 5 minutes namaz break and then let's continue again. Okay, I'll try setting up on this thing ताकि इसमें कोई लेकिन I don't want to move it, so there are going to be other problems which are going to be there, so I don't want to do that. That's it. Oh, nice question. I like this question. I don't know if you guys do, but I do like this question. Okay. The next question is that we have nitrogen monoxide is rapidly oxidized to nitrogen dioxide. अच्छा, इसके अंदर हमने I know that you guys don't like Hess cycles, you know, most of you guys don't. Yeah, if I was able to pinpoint or if I was able to, you know, see your raised hand, so you would have, you know, told me that अच्छा हमें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये वाले questions, है ना. So for sure I know that. चलो, let's do this question and then let's move to namaz break. ठीक है. अच्छा, so we have nitrogen monoxide, which is rapidly oxidized to nitrogen dioxide. Achha, we have, now this question is very confusing. इसके अंदर हमने 2 Hess cycle बनाने हैं. अब you can make the same Hess cycle and extend it, or you can make the 2 Hess cycles. अब Hess cycle के अंदर I think most people struggle with the arrows, कि arrows किधर जा रहे हैं. ठीक है. अब आपके पास जो डेटा होता है, क्या combustion data होता है या formation data होता है? In AS at least, आपके पास या combustion data होता है या you have your formation data and how you utilize that. ठीक है. Now they often ask you the formation, और formation हमेशा element से होती है. तो अगर carbon dioxide water बन रहा है, so that's your combustion data. ठीक है. चलें, let's talk about how to make the Hess cycle in this case. So we have, now I usually draw a box diagram for this, and I make 3 boxes and I write them as A, B and C. Sorry, space constraint here. ठीक है. और अब मैंने एरोज अभी यहाँ पे नहीं लगाए. A, B और C मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए. अब मैंने इन बॉक्सेस में क्या डालना है? That. So मेरे पास nitrogen monoxide है, which is rapidly oxidized to nitrogen dioxide. They have given me the equation. 2NO and O2 is going to form 2NO2, and they have not given me any delta H value for this. अभी तक, ठीक है. Nitrogen dioxide can then dimerize to form डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. डाइमराइजेशन आपने AlCl3 की पढ़ी होगी, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वही काम कर रहा है कि N2O4 बना रहा है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना रहा है, और उसकी मुझे उसने बॉन्ड एंथैल्पी दे दी है, या उसने मुझे डेल्टा H की वैल्यू दे दी है, दैट इज NO2 से NO. अच्छा, मेरे पास अब जो पहली इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से, इसकी डेल्टा H की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है, और NO की फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई है, और NO2 की फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई है. तो यानी कि NO की फॉर्मेशन और NO2 की फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, अच्छा एक और इक्वेशन भी है, that we have NO and O2 is going to form N2O4. So पहले I'm going to use the formation data, क्योंकि मेरे पास ये 58 इस इक्वेशन की दी हुई है, उसने मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई है, उसने मुझे इसकी फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है. और ये फॉर्मेशन हो कहां से रही है? दिस फॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. So the first thing I'm going to do is I can write the equation. Now it's up to you where you want to place ABC or what you want to place in ABC. Okay, but obviously it's I won't say to move to my method because it's the last day. I would urge you guys to stick to the method you've been using throughout your AS. अब क्योंकि मैंने ये method बताया है, अगर समझ में आ जाता है well and good, अगर नहीं आता, so I think I can move around with your method. You can obviously solve this question. जरूरी नहीं है कि बॉक्स मेथड समझ के अभी करना है, बिकॉज यू बीन डूइंग क्वेश्चन अ सर्टेन वे, लेकिन बॉक्स मेथड इज अ रिलायबल मेथड व्हेन योर क्वेश्चंस गेट आंसर्ड. एंड यू नो, I know that if some of my students are looking at it, they will be happy to that they know the box method. Okay, so we have N2 and O2. These are the elements which are forming what? These are the elements which are going to form NO. And these are the same elements which are going to form NO2. Now I can arrange them this way, or I can also say कि अच्छा मुझे ये ऐसे पसंद नहीं आ रहा. I have this already formed equation. I have NO plus O2 which is forming 2NO2.
ये ऑलरेडी इक्वेशन ये वाली बनी हुई है, ठीक है ना. सो आई कैन राइट N2 plus O2 and the elements are forming this. ठीक है. सो अगर आपको ये वाली इधर वाला देखें उधर वाला देखें, बात एक ही कर रही है. ठीक है. बेशक आप ये वाली ले लो और बेशक ये वाली ले लो, बात एक ही है. एलिमेंट से आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और एरो मेरे ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी. दैट्स व्हाई यू थिंकिंग कि शायद वो एक अलग डायग्राम है. दे आर बोथ द सेम. इफ यू रीअरेंज देम यू गोइंग टू एंड अप विद द सेम थिंग. ठीक है. तो जहां पे मर्जी लगानी है, जहां पे मर्जी लगा लें. नाउ लेट्स लुक एट दिस वैल्यू एंड लेट्स प्लग इन द वैल्यूज व्हिच आर गिवन टू अस. तो N2 and O2 के लिए they have given me 91. Let me just change the color. They have given me plus 91 for nitrogen monoxide की formation, plus 91. And if you look at the balanced equation, I have 2 of nitrogen monoxide. तो यहाँ पे 2 आ गया, तो I'm going to multiply this value with the 2. ठीक है. ये डेल्टा एच हो गई हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन. नाउ आई हैव N2 and O2 which is forming again 2NO2, और इन्होंने मुझे इसका भी डेटा दिया हुआ 34 and that is plus 34, and again I'm going to multiply it with the 2 plus 34. Now what is not given to me is this value, क्योंकि हमने ट्रायंगल तो पूरा करना है ना. सो एक चीज जो उसने मुझे नहीं दी हुई वो कुछ ये बनी है. आप NO and O2 मिला के NO2 बना सकते हैं और इसका एरो यहाँ पे आएगा. दिस इज X. ठीक है. सो व्हेन आई यूज दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. यहाँ पे भी अगर ये वाला पसंद आ रहा है तो इसको भी N2 से, ये भी 2 है और ये भी 2 है. ठीक है. सो N2 से O2 की फॉर्मेशन, NO and O2, सॉरी क्या कर रही थी मैं, N2 and O2, NO की जो फॉर्मेशन है दिस इज 91 times 2, द सेम थिंग व्हिच आई डिड. और ये वाली जो फॉर्मेशन है दिस इज plus 34 times 2. ठीक है. और ये मेरा X है. तो ठीक है. ये एरोज इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा. आप बेशक ये वाले में, इसमें आंसर दोनों में सेम आ रहा है और मैंने सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है, अदरवाइज इट्स द सेम. ठीक है. जस्ट पोजीशन हैज चेंज, अदरवाइज इट्स नॉट डिफरेंट. सो यू कैन पुट ABC में कोई भी वैल्यूज आप लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली एलिमेंट से जब भी आपके पास फॉर्मेशन में आ रहा है तो आई विल पुट एलिमेंट्स यहाँ पर और एलिमेंट से एरो पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है. यहाँ पे मेरे पास NO बन रहा था और यहाँ पे मेरे पास NO2 बन रहा था. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. और यहाँ पे मेरे पास O2 था और ये यही वाला साइकिल बन गया मेरा. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट द बॉक्स डायग्राम. ठीक है. ओके, कमिंग टू द वैल्यू ऑफ X, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X here. If I have to find the value of X, what I have to do is I will have to multiply these two values. Acha, now how do I know what is to be added, what is to be subtracted? ठीक है. Now there is in physics, those of you who take physics, you might remember studying and doing something which is called as a convergent beam and something which is called as a divergent beam. Converge हो के एक पॉइंट से निकल के फोकस हो रहा है. डाइवर्ज क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है. अब ये मीट कहाँ पे कर रहे हैं? सो ये एरोस कन्वर्ज कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पर. और ये जा कहाँ से रहे हैं? जा यहाँ से रहे हैं. तो जहां से जा रहे हैं उसको मैं A कह देती हूँ या मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह देती हूँ. ठीक है. और जहां पे वो मीट कर रहे हैं वहां पे इसको हम एंडिंग पॉइंट कह देते हैं या मैं इसको C कह देती हूँ. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हेस लॉ और हेस साइकिल में आपको बताया जाता है और यू आर बेसिकली टॉट दैट द रूट, विच एवर रूट यू आर टेकिंग, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी वैल्यूज. दैट जो मर्जी रास्ता ले लें, यू आर गोइंग टू रीच द सेम एंड डेस्टिनेशन, or the value which is going to be utilized is going to be the same irrespective of the path you take. ठीक है. So हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स बन जाते हैं. If I have to go to Gulberg, there could be number of ways by which I could reach Gulberg, right? Now that also depends on where am I commuting from. If I'm coming from Gulberg and I have to reach Malam, or if I'm coming from Model Town, if I'm coming from Defense, wherever I'm coming from is basically going to determine which pathway I'm going to take. अब ऐसे तो नहीं है ना that if I have to come to Gulberg, I will come to Model Town first and then I will go to Gulberg, which is going to be an indirect route, but it is possible. It is possible, right? So yeah, so when we talk about the indirect route and direct route, so अच्छा जी, अब direct route में हमारे पास कम एनर्जी या कम स्टेप्स लग रहे हैं और इनडायरेक्ट में हमारे पास ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं. अच्छा जी, लेट्स यूज डिफरेंट कलर. अच्छा जी, रेड यूज करते हैं. सो मेरे पास A, this was B and this was C. So this is step 1, this is step 2. This is my indirect route. This is going to be my indirect route. And this is going to be my direct route. ठीक है.
तो आप इसको इस तरीके से लेके चलें तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन मच मोर इजीली. दैट इज व्हाट आई से बाय द बॉक्स डायग्राम. ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट. अच्छा जी, अब हमारे पास जो वैल्यू थी, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी. सो दैट मीन्स ए टू सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. अब इसके अंदर मैं वैल्यू ए टू सी की पुट करती हूँ. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू ए टू बी की जो वैल्यू है that is going to be 91 times 2 plus x. And plugging in this value, I can find, let's check this out. Actually, so 91 times 2 is going to be 182. And this is plus 182 plus x equals to 34 times 2, that is plus 68. अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, so x in this case is going to become 68 minus 182. That comes out to be 114. That is not the answer because हमारा क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ. This is just one step because it's not that long, but because I was explaining इधर उधर से रास्ते आके, that's why it took long. ताकि मैं आपको बॉक्स डायग्राम को समझा सकूं, that's why it took long. अच्छा, मैंने बताया था that this question is requiring two things. So हमने इस वाले की हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट कर दिया. I'm going to make some space here. ठीक है, ये हमने निकाल दिया डेटा और हमने ये वाली डेटा यूज कर दिया. अब द थिंग वाज दैट हमने जो रिक्वायर था, इज माय दिस इज स्पॉटलाइट पेन. ओके, सो हमें जो रिक्वायर था, हमें ये वाली चीज रिक्वायर्ड थी. ठीक है, NO2 प्लस N2O4 जो डाइमर बना है उसका हमें डेल्टा नहीं गिवन है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि NO2 बना रहे, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -114. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम वन. आई एम गोइंग टू यूज NO प्लस O2 फॉर्मिंग N2O4 here. ठीक है, और इसका इंटरमीडिएट में आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है, आई कैन इनकॉर्पोरेट दिस वन. NO and O2 is also making NO2, ये ऊपर वाली इक्वेशन. ठीक है, सो यू कैन राइट दैट एनी वे यू लाइक. ये वाली जो हमारी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये वाली. ठीक है, और अब उसने मुझे क्वेश्चन में कहा हुआ था दैट व्हाट इज द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन NO and O2, यानी कि ये हमने फाइंड करना है और हमारे पास ये वाली वैल्यूज गिवन है. वैल्यूज कैसे गिवन है, ये उसने हमें दिया हुआ है कि NO2 से N2O4 की जो वैल्यू है दैट इज -58, और ये वाली वैल्यू NO and O2 वाली ये हमने अभी निकाली है, which came out to be -114. ठीक है, तो अगेन हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया क्योंकि NO2 डाइमर बना रहा है, तो इस वजह से N2O4 की तरफ एरो जा रहा है. तो अब इसको दोबारा से उसी तरीके से, अब इसके अंदर अगेन व्हाट इज द डायरेक्ट रूट एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट रूट. सो मल्टीपल स्टेप. अब यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट वेयर द पॉइंट्स आर कन्वर्जिंग एंड वेयर दे आर कमिंग टुगेदर. सो पॉइंट्स कन्वर्ज कहाँ हो रहे हैं, ये पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी माई एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स डाइवर्ज कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी माई स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू बी माई C in this case or endpoint, and this is going to be B. A, B, C blocks में जैसे लगाना है. ठीक है, so in this case what's going to happen is, यहाँ पे इसको जगह बना लेती हूँ. Okay, so in this case what we require is this. Okay, so हमारे पास A to B to C, A to B to C, this is my indirect route which has multiple step equal to A to C. अब A to B to C की जो एनर्जी है that is -114 plus -58 equals to A to C की एनर्जी मेरे पास नहीं है, that is X. ठीक है, and when I have -114 plus -58 and I solve for this and I get X to be -172. That's your D to be answer. ठीक है, तो हेस साइकिल की ये क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ फुल प्रूफ मेथड. सो इफ यू कैन ड्रॉ देम लाइक दिस, और अगर आपको लगता है कि आप
many times the students are like Hess के question हम draw किए बगैर भी बना सकते हैं, तो yes आप कर सकते हैं, but that is not going to be a reliable method and that's not going to be a foolproof way of solving that. ठीक है, so please try, अगर समझ में आ गया so please do try this method. एक दो questions कर लेंगे, so I think you will get a hang of it. If you need any further help with that, you can reach out to me as well. ठीक है, challenge. This is how you can do the histo cycle questions. Let's have a 5 minutes or 2 minutes break. Let's have namaz and then let's come back. ठीक है, चलें. I'm just coming in 5 minutes or 2 minutes.
All right, guys, I am back. I hope you guys have had the namaz break as well. चलिए, let's get started. Let's get rolling. अच्छा, ये question हमने कर दिया था. So let's move to the next MCQ then. अच्छा जी, in which equilibrium will an increase in pressure at constant temperature increase the yield of product on the right hand side of the equation? Acha, this was an easier question, but just to revise the concept of your O levels, when we talk about pressure, please remember pressure is just exerted due to the gaseous particle. And when we talk about the equilibrium in gases, what happens is that you have to rely on the number of moles on the reactant as well as the product side. Okay? Having said that, if you look at the first one, and please remember the gases are not involved. So in the first one, they're asking in which equilibrium will it increase in pressure at constant temperature. This is, yeah, at constant temperature increase the yield of the product on the right side. So अगर आप first वाला देखो तो A के अंदर तो pressure reactant का increase हो ही नहीं सकता, ठीक है? Option number B के अंदर if you look at that, so हमारे पास option number B में we have, pick this color, okay. We have gas, so we have 5 moles of this one, and we have 4 of this one. So increasing the pressure is going to move towards the less number of moles. Okay? When I talk about increase in, you guys remember the Lee-Shatler's principle. According to Lee-Shatler principle, what happens is when you increase, or Lee-Shatler principle is about equilibrium, and it states that जब भी आप equilibrium को disturb करते हो, it's going to move in the position as to oppose the change in order to regain that lost balance. ठीक है? So when I talk about the first one, इसके अंदर तो हमारे पास solid है. ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 मोल है गैस का. So if I increase the pressure of the system, it's going to move towards the less number of moles. लेकिन solids में हमारे पास pressure exert नहीं होता, ठीक है? Okay, option number B looks fine because we have 4 moles of HCl and 1 mole of oxygen, total 5 moles of the reactant. When I increase the pressure of the reactant, my equilibrium is going to move towards the forward direction. Okay, so that's going to be the answer. In this case, I have 2 moles and 2 moles. It's a tiebreaker situation. 2 और 2 कौन सी move करेगा? आपका कुछ change नहीं आएगा pressure के अंदर. यहाँ पे हमारे पास most of the time the students are going to pick option number D, and they're going to see कि अच्छा यहाँ पे हमारे पास moles ज़्यादा लग रहे हैं. But also see that sulfur, the iron is solid. So ये तो हम account ही नहीं करेंगे pressure के case में. So I have 4 moles of this and I have 4 moles of this because solid count नहीं हो रहा. Okay, so again, no change in option number C and D. Okay, so that's why option number B is going to be the correct option for this one. Okay, let's move to the next MCQ. अच्छा जी, तो हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड. अच्छा जी, ये पीके की केपी हाँ केपी निकालें. चलें जी, केपी निकालते हैं. सो पार्शियल प्रेशर. Hydrogen iodide is added to an evacuated reaction vessel. The vessel is sealed and warmed. The decomposition reaction occurs. Hydrogen and iodine are formed. Some hydrogen iodide remains. When equilibrium is established, the total pressure is 1.2 to 10 raised to the power 5 pascals. The partial pressure of hydrogen is 4 to 10 raised to the power 3 pascals. Hydrogen iodide, hydrogen and iodine are all gases under the standard conditions or the conditions used. What is the value of Kp for the equilibrium at this temperature, assuming the decomposition is the forward reaction? इतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के I have to take a breath and I have to calm myself कि अच्छा हो जाएगा. It's just a question. It's just a question. So whenever you are stuck and you just are overwhelmed with the information which is given to you, just take a minute and just breathe it with me. ठीक है? Just remember my words in the paper tomorrow as well. ठीक है? चले. So you just have to take a deep breath. चले. Let's take a deep breath in with me because इतनी ज्यादा data देख के I sometimes get overwhelmed as well. कि अच्छा इसने करना क्या कह रहे हैं? Let me break the question. So 1, 2, 3, and then we breathe, and then we read the question again. ठीक है? चले. Hydrogen iodide is added to an evacuated reaction vessel. Okay, the vessel is sealed and warmed. ठीक हो गया. A decomposition reaction occurs. ठीक है? Hydrogen and iodine are formed. Decomposition. ठीक है? तो equation लिखने पहले.
डिकम्पोजिशन में हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन दे आर टॉकिंग अबाउट. मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है. दिस इज द इक्वेशन बिकॉज the composition of the hydrogen iodine formed, देखो iodine remains. ठीक है, when equilibrium is established, the total pressure उसने हमें दिया हुआ है. partial pressure of hydrogen is this. अच्छा जी, टोटल प्रेशर उसने दिया हुआ है. चलिए पहले हम Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. When I talk about the expression for Kp, Kp is going to be partial pressure of hydrogen multiply by partial pressure of iodine divided by partial pressure of hydrogen iodide. सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करना बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है. रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स हैं इसके. ठीक है, टोटल प्रेशर उसने मुझे दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो प्रेशर है वो उसने मुझे दिया हुआ है. अब और उसने कहा when the equilibrium is established, total pressure is this. Partial pressure of hydrogen उसने दिया हुआ है. Now if you look at the moles of hydrogen and iodine, they are the same. That means the partial pressure is going to be the same as well. Partial pressure of hydrogen is this, so I'm going to multiply it with a 2, which is going to give me the partial pressure of hydrogen and iodine. Okay, and when I do this, let's plug this value in there. I think 8 into 10 to the power 3 आ जाएगा ना? हाँ, 8000 आ जाएगा. Yes, 8000 आ जाएगा, या 8 into 10 to the power 3 आ जाएगा. अब टोटल प्रेशर उसने मुझे दिया हुआ है. अब जब रिएक्शन हो रहा था तो इनिशियल मेरे पास जो टोटल प्रेशर था दैट वाज 1.82. जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई तो 8000 बन गया. सो कैन आई सब्ट्रैक्ट 8000 में 1.2 into 10 to the power 5 में से 8000, ताकि मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर आ जाए. ठीक है, टोटल प्रेशर वो ये था स्टार्टिंग. जब 8000 मेरा यूज अप हो गया फॉर हाइड्रोजन आयोडीन, व्हाट इज लेफ्ट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन आयोडाइड. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1.2 into 10 to the power 5 minus 8000, I get 1.12 to 10 raised to power 3 here. So let's use this column. So hydrogen iodide का जो pressure होगा, that is going to be 1.2 into 10 raised to power 5 minus 8000, which is going to give me 112,000. This is the partial pressure for hydrogen iodide. Now, if I plug this into the this one calculator, तो मेरे पास 4 into 10 raised to power 3 है for both of these. So 4 into 10 raised to power 3 multiply by 4 into 10 raised to power 3. अगर आप स्केल लेना चाह रहे हो go ahead, but प्लीज इसकी वैल्यू ध्यान से प्लग इन कीजिएगा बिकॉज आपका डेटा सही होता है, बट व्हेन यू प्लग दैट इन तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. एंड दिस इज गोइंग टू बी 112,000 raised का स्क्वायर. चलिए लेट्स डू दिस. And please use the brackets while using the calculator because sometimes scientific calculators में ये भी issue करता है 1.12. So मेरा जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है. Let me just redo this. So this was 4 minus. So I get 1.28. नहीं, sorry. 1.2. मैं इसको स्क्वायर नहीं दे दी थी डिनोमिनेटर का. सो ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट कम्स आउट बी 1.25 स्क्वायर लेने के बाद into 10 raised to power 10. 1254. हाँ. So 4 into 10 raised to power 3 का स्क्वायर divided by 1.25 10 raised to power. तो मेरे पास हाँ ये द वैल्यू एग्जैक्टली इफ आई प्लग दिस इन, यानी कि इफ आई डू दिस 4 into 10 raised to power 3 का स्क्वायर divided by 1.25 into 10 raised to power 10. So the answer which I get is 1.28 into 10 raised to power minus 3, which is this answer, which is so exact. I get so happy when I get the exact same answer, which is not usually the case. तो हमें
कभी 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 नहीं, अक्सर ही केमिस्ट्री में हो जाता है दैट यू गेट द राउंडेड आंसर, यू गेट द क्लोजेस्ट आंसर, बट यू डोंट गेट द सेम आंसर, so that's totally fine. ठीक है, चलें जी, ये हो गया एमसीक्यू हमारा खत्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू क्विकली. अच्छा जी. Okay, so we have to talk about the period friends as well. अच्छा, for the revision, if you guys are listening to this, जो group 7 के reactions है ना, please उसकी equations और उसके reactions वो ध्यान से देख लेना. Hydrocarbon बहुत paper तुम्हें इसको पसंद है. Let me just give you in the last 10 minutes what should be, you know, what you should be revising, because उसके ऊपर बहुत सारे MCQs आए हैं and that is something which the students get very confused in, so you need to work on those as well. अच्छा जी, next MCQ is the 17 one. Okay, so we have, you need to remember the trends as well. Actually, you have to remember everything. So, okay, so we have L, M, and N are three different elements. Sorry, are three different elements from period 3 of the periodic table. L is an element whose atoms have 3 unpaired electrons in the p subshell. Let's write period 3 first. What are the elements which are present in period 3? So we have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. L and M are three different elements from period 3 of the periodic table. L is the element whose atoms have 3 unpaired electron in its p subshell. Aluminum में 3 silicon, L, phosphorus. Phosphorus. Why phosphorus? Let me just tell you that. 3 unpaired PFG. Phosphorus is 15, P15, ठीक है ना? And when I talk about the configuration, that is neon 10, then we have 3s2 and 3p3. ठीक है, this is the 3p3 means कि 3 सबशेल्स हमारे पास जो x y z है इसका, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, x y और c, 3p3. ठीक है, अच्छा जी, तो L जो है वो क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया. M is the element with the highest electrical conductivity in the period. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप लोगों को उसका, आपको शायद ग्राफ याद हो, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द पीरियड. सो हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये चारों बेचारे तो नॉन कंडक्टर्स हैं. ठीक है, सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर, बट आई थिंक एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सबसे ज्यादा हैं इन एल्यूमिनियम. ठीक है, I think so. N is the element with the highest melting point of the period. Silicon is a giant structure. ठीक है, so N जो होगा वो मेरे पास सिलिकॉन हो सकता है. I'm just writing it down. How am I, sorting it down? हाँ, आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. I'm a human being and that can totally happen as well. अच्छा, which statement about L is correct? L has atomic number. अच्छा, M क्या है? M is aluminum and M and lower atomic number than N. Aluminum की तरह. Phosphorus नहीं. एटॉमिक नंबर लोअर तो नहीं है N से. N तो मेरे पास सिलिकॉन है ना. एटॉमिक नंबर लोअर देन N. एटॉमिक नंबर हायर नहीं, ऑपोजिट है. ओके, L हैज लोअर एटॉमिक नंबर देन M. नहीं, हायर है. ओके, L has atomic number, L has a lower atomic number than both M and N. Okay, so aluminum. Okay, so we have, this gets confusing. So we have aluminum, silicon, and phosphorus, and this is M, this is N, and this is L. You can use this key. L has a lower atomic number than both M and N. Phosphorus नहीं. L has a higher atomic number. हाँ, ये ठीक है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो इसका atomic number ज्यादा होगा. ठीक है,
L has a lower atomic number than M and नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ऑपोजिट है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। अच्छा, पीरियड से मुझे याद आया कि पीरियड के ट्रेंड्स और पीरियड के ग्राफ्स, आप कहेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब कुछ कहती जा रही है कि अच्छा ये भी रिवाइज कर लो, वो भी रिवाइज कर लो, लेकिन ये वाली चीजें आर गोइंग टू बी हैंडी एज वेल। ग्राफ्स कम से कम देख के जाइएगा कल के पेपर में, ठीक है ना। ग्राफ्स आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू, बिकॉज कंडक्टिविटी भूल जाती है, अच्छा इस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किस तरह की थी और इस तरीके से, एंड यू गाइस हैव बीन स्टडीइंग थ्रू इट, सो आई होप दैट दैट्स नॉट गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, दिस वाज अ फन क्वेश्चन। Acha. So we have reaction 1 and 2, and the point is to revise these MCQs, which are going to touch a few of the spots जो के बंद हुई भी लाइटें दिमाग की वो खुल जाएंगी, and then you will be able to solve those questions. अच्छा, in reaction 1 and 2, X represent an element in period 3. ठीक है, period 3 अभी हमने ऊपर बात की। Reaction 1, chlorine plus element X. ठीक है, XyCl2 ClZ. चले इसके जरा कंपाउंड लिख लेते हैं, आपको रिएक्शंस याद होंगे पीरियड 3 के विद क्लोरीन एंड पीरियड 3 के विद ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस टू राइट। सो पहले मेरे पास बनता है एलिमेंट एक्स के साथ, क्योंकि एलिमेंट एक्स इज फ्रॉम एनी एलिमेंट एंड कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस वन, sodium to phosphorus. Okay, so we have NaCl, we have MgCl2, we have AlCl3, we have SiCl4, then we have PCl3 या PCl5, PCl3 ले लें या PCl5 ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इसका ट्रेंड हो गया फॉर योर ऑक्सीजन। अब सॉरी क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट एक्स का ले लेते हैं, सो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, phosphorus का P4O10 and P4O6, yes P4O6 and P4O10, और उसने हमें फास्फोरस तक कहा, तो मैं सल्फर पे नहीं जा रही, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द रेशियो शोज अ स्टेडी इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फास्फोरस। अब जो रेशियो उसने दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर वो डिफरेंट है, ठीक है। एक्स टू एक्स जी की रेशियो, यानी कि अगर एक्स जी की रेशियो की वो बात कर रहा है, सो दिस रेशियो इज 1:1, ठीक है। एक्स के साथ जो लगा हुआ है दिस इज 1:2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो वो क्वेश्चन की बात कर रहा है उसने Z और Y की बात की है, उसने यहाँ पे ये रेशो उल्टा दी है, यहाँ पे वो Y रेशो Z की बात कर रहा है और यहाँ पे उसने Z और Y की बात की है, और यहाँ पे उसने PQ की बात की और यहाँ पे वो QP की बात कर रहा है, रेशो उल्टा दी है, ठीक है। सो क्वेश्चन मजे का है, लेकिन दिस गेट्स स्टूडेंट कंफ्यूजिंग कि इसको सॉल्व क्या करना है, किस तरीके से करना है, सो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। अच्छा जी, तो देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज बिकॉज दिस इज 1:1, दिस इज गोइंग टू बी 1:1 is going to be 1, this is going to be 2, 3:1 is going to be 3, 4:1 is going to be 4 and 5, so ये इसमें इंक्रीज जा रहा है, ठीक है ना। Z और Y की बात करेंगे। अब वापस आ जाए Na2O पे, और इसकी भी रेशो उसने उठा दी है, Q रेशो P करती है, यानी कि ऑक्सीजन पहले और फॉस्फोरस बाद में। अब इसके अंदर 1:2 मीन्स 0.5 है इसकी, 1:2, this is 1 and this is 3:2, that is going to be 3.5, 3:2 is sorry 1.5. अब वो तो whole number की रेशो थी in the case of chlorine, so that was easier. The students got confused when they were asking 0.5 वाली ratios. This is 2:1, so this is going to be 2. P4O6 is going to be 6:4 is going to be, नहीं, 10:4 is going to be 2.5. तो इसकी डेसिमल वाली रेशियोस है, तो ये अगर आप देखें तो देयर इज अ स्टडी इंक्रीज फ्रॉम हियर एज वेल, ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, और यहाँ पे भी दिस इज 1, this is 2, this is 3, 4 and 5, so there is a steady increase here, there is a steady increase there as well. So both Z and Y and P and Q are showing a steady increase from sodium to phosphorus. रेशियोस के अंदर इंक्रीज आ रहा है और रेशियो की प्रोपोर्शन उन्होंने उल्टी कर दी है, ठीक है। चलिए जी, all right guys, let's move to the next MCQ quickly.
अच्छा जी ऑर्गेनिक आ गई ऑर्गेनिक अच्छा कंपाउंड X C5H10O3 has one chiral carbon atoms per molecule. Compound X produces bubbles with sodium, not with Na2CO3. अच्छा जी reactions organic की are going to come up like that, and sometimes you have to write the reactions for all of these. How I used to do that is too much time consuming sometimes, लेकिन वो ये है कि मुझे तसल्ली नहीं होती कभी कभी, तो that takes sometimes longer time as well. अब आपको अगर सोडियम के रिएक्शन याद है तो सोडियम इज अ मेटल. सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद एन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बट इफ यू रिमेंबर सोडियम आल्सो रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स एज वेल एंड इट फॉर्म्स सोडियम एथॉक्साइड. ठीक है. Na2CO3 on the other hand will just react with carboxylic acid. If you remember, metal carbonate and alkalis or bases react with carboxylic acid. Yes, sodium do reacts with alcohol, but sodium carbonate would not react with alcohol. So let's look at the options. Which formula could represent compound X? So if it's an alcohol, if it was an acid, it would have reacted with sodium carbonate as well. तो हमारे पास C5H10O3 है and it has one chiral carbon. So अगर आप compound 1 देखें, चले chiral इसने कहा है कि हमारे पास इसमें एक chiral center है. ठीक है, has one chiral carbon. Let's use a different color. So CH3 इसमें chiral नहीं है इसमें. This is not going to be chiral. ठीक है, if you want I can open this up, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि इस कार्बन के साथ दो CH3 लगे हुए. ठीक है, so this is not going to be chiral. ये OH CH2 CH CH3 OH इस ये सेकंड पे मुझे शक हो रहा है. This could be the answer. चलिए सेकंड बना के देखते हैं. So this is CH2 and this is OH. This is CH and this is CH3 H CO CH3. So it does look like कि ये कार्बन हो सकता है मेरे पास. Yeah. CO2 CH3. अच्छा सॉरी, इसके साथ एक और वो भी आ रहा है. This is an CO2 CH3. So यहाँ पे this is going to be it. ठीक है. अच्छा, और अगर आप ये वाला देखो तो इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है this is chiral. एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप. 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. तो yes, this is chiral. This is not chiral. CH3 CH2 C CH3OH इसको चेक किया जा सकता है. Let's check this one as well. So CH3 CH2 C इसके साथ CH3OH CO2H. इसके साथ क्या मसला है? ये भी तो कार्बन हो सकता है. CH3 ओ इसके साथ मसला कुछ नहीं है. ये इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. हाँ, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. इसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक नहीं है. इसके अंदर खाली हमारे पास OH ग्रुप है. ठीक है, अगर Na2CO3 के साथ रिएक्ट करना था तो वो कार्बोक्सिलिक होता. ये कायरल है, बिल्कुल है कायरल, लेकिन मैं देखती इसमें मसला क्या है. कायरल है बिल्कुल, लेकिन इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम, नॉट विद सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. इफ यू लुक एट दिस वन, इसके अंदर ये कायरल नहीं है फॉर दिस रीजन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा जी, चले नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलें. फिर से कोई मैं आपको ऐसा एमसीक्यू दे दूंगी. चले आइसोमर्स वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे. आई इन द क्लास इज वेल दे वुड बी लाइक मिस आप इतनी खुश हो जाती है जब ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच आई नो दैट it's not that I'm enjoying your misery, although part of me is enjoying that, but at the same time I know that it's going to be hard and I can get stuck sometimes in these questions as well.
सो आई एंजॉय, थोड़ा सा वो होता है ना कि आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू कर देता है कि अच्छा ये इतने बन रहे हैं तो इतने किसी क्यों नहीं बन रहे हैं. सो थिंकिंग आई थिंक इज समथिंग व्हिच मेक्स मी स्माइल अ लिटिल ऑन दैट. चलें. I told you that you are going to try to make maximum isomer. चलें. Ethane reacts with an excess of chlorine in the presence of UV light to form a mixture of products. How many of these products contain 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? 1 or more chlorine atoms. Mixture of product. तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या करना है? आपके पास इथेन है, that is C2H6, plus you have chlorine, and आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी तो पहला प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, that's going to be C2H5Cl. ठीक है. फिर आप सारे क्लोरीन आहिस्ता आहिस्ता करके उतारते जाएं, H4Cl2. ठीक है. ऊपर जा रही हूँ मैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास. ठीक है. I could write, oh, I could write here as well. I thought that I could not write there. अच्छा, so I have C2H4Cl2, then carbon number same, CH3Cl3. ठीक बना रही हूँ ना? हाँ, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं. So C2H2Cl4, C2HCl5, C2Cl6. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. अच्छा, हमने कहा था मैक्सिमम ट्राई करने. अब मेरे पास ये जो C2H4Cl है, ये इसके अंदर तो क्लोरीन एक ही जगह पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आई हैव पॉसिबिलिटी दैट आई कैन अटैच क्लोरीन wherever I want to. That means 1 2 3 4. अच्छा, अब मेरे पास क्लोरीन एक कार्बन सेम पे भी लग सकता है, या ये क्लोरीन मैं इसके साइड भी लगा सकती हूँ. सेम कार्बन में भी लग सकता है क्लोरीन और 2 पे भी लग सकता है, तो इसके 2 बन जाएंगे. ठीक है. इसी तरीके से इसकी मैं बात करूं, ये जो क्लोरीन है, यू कैन डू द स्ट्रक्चर्स योरसेल्फ. इसको मैं सेम कार्बन पे भी लगा सकती हूँ, यानी कि 2 क्लोरीन्स मेरे एक कार्बन पे, या तीनों क्लोरीन्स मेरे एक कार्बन पे, और 2 क्लोरीन्स मेरे एक कार्बन पे, और एक क्लोरीन सेकंड कार्बन पे. तो ये भी मेरे पास 2 स्ट्रक्चर इसके बन गए. कितने हो गए? तो एक तो इसमें से होगा ना, तो यानी कि टोटल ये जो मैंने 2 लिखे हैं टोटल लिखे हैं. देन वी हैव C2H2CO4. इसके अंदर I can have 1 1 1. Let me just do that. So I can have chlorine, 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 chlorine. एक ये बन सकता है, और दूसरा कौन सा बन सकता है? 1 1 1 2. और इसका एक ये भी बन सकता है, 2 क्लोरीन यहाँ पे और 2 क्लोरीन. या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ठीक है ना. सो ये जो था मेरे पास, ये था 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3, और यहाँ पर 4 क्लोरीन. ठीक है. तो इसको मैं 2 तरीकों से लगा सकती हूँ. C5 में आई डोंट थिंक आई हैव द ऑप्शन. C6 में आई डोंट हैव द ऑप्शंस. आई होप दिस इज क्लियर. CH3 भी लगा के दिखा देती हूँ. 1 2 1 2 3. Yeah, I know that you will be like, ये मिस को क्या हो गया है? Is he for real? So yes, this is what they are asking you to do. 1 2 and 3. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों में एक ही क्लोरीन पे लगा, एक ही कार्बन पे लगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो ये 2. अच्छा, आप काउंट करें टोटल. चलें जी, लेट्स काउंट. सो 1, और इसके, अच्छा इसका मैंने एक ही बनाया था, एक और बना देते हैं इसका. So 1 2. Yeah. Okay. Let's count now. So एक ये बन गया. इसको अरेंज करने के मेरे पास 2 तरीके थे. एक तरीका ये था, दिस इज सेकेंड,
एंड दिस इज थर्ड। एक ही कार्बन पे लगा दिए, दो अलग अलग कार्बन पे लगाए, सेकेंड थर्ड, फिर हम गए थ्री पे। तो इसको अरेंज करने के ये दो तरीके थे, 4 5, और इसकी जो Cl4 था इसका 5 6। इसको अरेंज करने का एक तरीका, देखिए 5 के लिए 5 नहीं 1, कुछ गड़बड़ की मैंने, 1 2 3 4 5 4 5 6 7। क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ की है मैंने। अच्छा, तो मेरे इसके आइसोमर दो बन गए, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 बन गए, ठीक है ओके। 9 बन गया आइसोमर्स ना, तो टोटल 9 आइसोमर्स बन गए। लेट मी जस्ट रीकाउंट इट फॉर यू गाइस। 1 नहीं, let's use a different color, otherwise like me you will be getting confused as well. So 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन दोनों के विचारों के एक ही बनेंगे। ये इसके मैंने दो यहाँ पे बनाए, और इनके दो यहाँ पे बनाए, और इसके दो यहाँ पे बनाए। सो टोटल आइसोमर मेरे पास कितने बन रहे हैं, 9। So yes, when I see this question, I sometimes get excited क्योंकि वो थोड़ा सा होता है कि अच्छा let's try the different combinations. So I hope you guys are clear. So please इस तरह के questions को थोड़ा सा enjoy करेंगे तो फिर I think अब थोड़ा late हो गया enjoy करने के लिए, लेकिन you can totally do these questions. इसमें इतना नहीं है. I know this can be sometimes time consuming, but like I told you earlier on that you should aim to make maximum of the isomers. ठीक है? अच्छा जी, चलें नेक्स्ट पे चलें, 30th क्वेश्चन पे। So we have alkynes which are hydrocarbon that contain one triple bond triple. Now everybody remembers the Markovnikov rule, I hope. I hope everybody does because that's very important. अब Markovnikov rule क्या कहता है? I remember when I was studying, so my teacher used to enjoy the Markovnikov rule because it was putting us in misery. मुझे समझ में नहीं आता होता था कि what is the Markovnikov rule meaning us to say. अब I think जब when I started, तो I think अब मुझे ज़्यादा समझ में आ गया. But I remember my teacher used to take misery के Markovnikov rule, and वो एक वो जो I think the name disproportionation reaction that he used to enjoy as well. अच्छा जी, alkynes are carbon triple bond carbon. Markovnikov rule आपने alkenes में पढ़ा हुआ है, but it can be applied to the alkynes as well. Like alkynes take part in addition reaction. A saturated compound can be formed. For example, ethyne C जो है हमारे पास C2H2 reacts with an excess of hydrogen to form ethane. Propyne C3H4 undergoes an addition reaction with an excess of hydrogen bromide in 2 stages. Markovnikov rule applies to the addition of HBr at each stage. What is the main product obtained when propyne reacts with an excess of hydrogen bromide? चलो, अच्छा जी, प्रोपाइन C3H4 है, तो पहले प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 C3H है ना, C3H4। ओके, सो ये मैंने 6 बॉन्ड्स बना दिए। Yeah, this is propyne. ठीक है, and this is going to react with HBr, और HBr के साथ इसका addition reaction होता है. This is going to you could say break the bonds. It's going to have partial positive charge. This is going to have a partial negative charge. और ये जो है हमारे पास जो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, अब मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन वहां जाके लगती है जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे तो मेरे पास CH3 पूरा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन इस केस में कहाँ पे लगेगी, ये जो CH वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाके लगेगा, और ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और फिर कार्बोकेटाइन के पास जो है वो ब्रोमीन जाके अटैक करेगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप का रिएक्शन हो रहा है। तो पहले स्टेप के अंदर हमारे ये जो हुआ रिएक्शन, तो आई एम गोइंग टू हैव CH3, आई एम गोइंग टू हैव Br नहीं भी फॉर्म हो रहा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा पहले स्टेप पे, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव अ डबल बॉन्ड, आई एम गोइंग टू हैव CH, ये, और फिर यहाँ पे ब्रोमीन अटैक करेगा द नेक्स्ट स्टेप,
And when the bromine attacks, I'm going to have CH3, C, Br, and फर्स्ट स्टेप में अच्छा एक्सेस है HBr हमारे पास एक्सेस में तो पहले मेरे पास ब्रोमीन लग गया और मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा H and H क्योंकि मेरे पास HBr उसने कहा हुआ है अप्लाइज टू ईच स्टेज अब दोबारा से यही होगा अब यहाँ पे दोबारा से हाइड्रोजन लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर अब क्योंकि HBr मेरे पास एक्सेस में है तो दोबारा से यही रिएक्शन होगा दोबारा से H यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा ठीक है सो दिस इज व्हाट इज probably going to happen in this case so लेकिन उससे पूछा गया है हाँ तो उसने पूछा what is the main product obtained when propyne reacts with excess of this one so अगर आप इस प्रोडक्ट को डिकोड कर सकें ठीक है मैंने इसकी ऑप्शन नहीं पढ़ी sometimes if you can do these reactions yourself so I think that is going to be a way of helping you out so you can see that CH3 CBr2 CH3 so my answer is D ये मार्कोनी का रूल याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो रहा है और ब्रोमीन कहाँ पे अटैच हो रहा है एंड देन यू गाइस आर गुड टू गो ठीक है अच्छा जी देन वी हैव द नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट अगेन योर फेवरेट आई एम जस्ट गोइंग टू डू 5 आई थिंक 5 more MCQs and that's going to be till I think 7th उसमें हो ही जाएंगे and extremely sorry guys for keeping you guys waiting my first time on the you could say online YouTube playing YouTube for the first time so there were so many hiccups which were coming up as well and this is the setup which is not very ideal but we are just going about it I know that there are some changes which needs to be done and hopefully in the next session they will be sorted out inshallah okay coming back again 31 MCQ पे आ जाते हैं bromine reacts with alkene by an electrophilic addition mechanism in which a cation is formed as an intermediate what is it saying anybody can get what is it saying bromine reacts with alkenes by an electrophilic addition mechanism हम सबको आता है ठीक है ना alkenes में addition reaction होता है in which a cation is formed as an intermediate ठीक है which mixture will produce the most stable intermediate cation आपको याद होगा जब हम कैटाइन की बात करते हैं तो टर्शरी कार्बोकैटाइन इज द स्टेबलेस्ट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का जो कहानी है वो आप सबको याद है ठीक है तो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है there are more alkyl groups and that's going to be more stable so we have to find amongst these options which is going to be a tertiary carbocation let me just scroll my screen upwards and then I can ज़्यादा ऊपर चली गई I think this is okay let us begin. So you need to remember that tertiary carbocation are the most stable because उनके साथ ज्यादा alkyl groups लगे होते हैं ठीक है अच्छा जी so bromine is reacting with alkene pentwanine and bromine अच्छा जी इथीन एंड ब्रोमीन का अगर मैंने रिएक्शन करना है सो दिस इज इथीन व्हाट इज इथीन दिस इज इथीन प्लस वी हैव ब्रोमीन एंड या ब्रोमीन को खोल के लिख देते हैं लेट्स डू इट जिस तरह मैं खोल के लिखती होती हूँ आई थिंक दैट वुड हेल्प मी आउट इस बार सो C double bond C and we have bromine which is going to have a partial negative and partial positive charge and the pi bonds here are going to attack this bromine and this bond is going to break down and we are going to have अब यहाँ पे तो मेरे पास एक सिमेट्रिक कंपाउंड बन रहा है ना तो ये मेरे पास कार्बोकैटाइन बन गया CH वाला ठीक है और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया और इसके अंदर प्लस Br माइनस तो इसके अंदर तो मेरे पास ये सिमेट्रिक था तो इसने इसको जाकर अटैक कर दिया तो ये सिमेट्रिक मेरे पास कंपाउंड बन गया एंड दिस इज माय प्राइमरी कंपाउंड प्राइमरी आर नॉट स्टेबल सो दिस कांट बी B if you look at methyl propene and bromine
लेट्स लुक इनटू दैट। जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में 3,3 डाइमेथाइल पेंटवानिन है, वो भी आपके पास प्राइमरी बनाएगा, इस वजह से मैंने इसको भी सॉल्व नहीं किया। इफ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा जी, मिथाइल प्रोपीन, प्रोटीन कैसे बनाते हैं? सो 1 2 and 3, and this is my methyl group because they have not told कि methyl group कहाँ लगाना है। And this is my methyl propene, this is my propene, and प्रोटीन के अंदर मिथाइल ग्रुप मैं यहीं पे लगा सकती हूँ, 2 मिथाइल प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है। CH2, ठीक है। अच्छा, when bromine is going to अच्छा, we are reacting it with bromine। सो ब्रोमीन यहाँ पे जाके अटैच होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा था, 1 2 और 3। यस, यस। और ये दिस इज एसिमेट्रिक एज वेल, हमारे पास लेफ्ट और राइट से सेम प्रोडक्ट नहीं आ रहे। एंड इफ आई जस्ट गो विद प्रोटीन 1 2 and 3 1 2, ठीक है, and bromine। So if I go with this, I'm going to have, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। लेट्स चेंज द कलर अगेन। एक ब्रोमीन मेरा लग जाएगा यहाँ पर और एक ब्रोमीन मेरा लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एक, दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी। हमें टर्शरी चाहिए था, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज गोइंग टू बी। अल्लाह ऊपर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, मैंने ऑर्गेनिक अच्छे खासे एमसीक्यू डाल दिए, है ना, इसीलिए दैट यू गाइस आर प्रिपेयर्ड एंड यू वुड बी लाइक, अच्छा अब ऑर्गेनिक इज हलवा, वी डोंट नीड टू लुक इनटू दैट। Okay, so we have X, Y, and Z, which are 3 isomeric alcohols. Let's figure out what type of alcohol do we have, primary, secondary, and tertiary first, and then let's move forward from there. So ये तो primary है, this guy is secondary, and this guy is tertiary. ठीक है? Separate samples of alcohols are warmed with a mild oxidizing agent, and the results are noted. One of these alcohols, when dehydrated, will give a cis trans isomer with molecular formula C5H10. हाँ, ओके। अच्छा, अब उसने कहा है कि हम उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं अल्कोहल को, और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें इथीन मिलता है या एल्कीन मिलता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज गोइंग टू गिव मी एन इथीन और एन एल्कीन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल जो है दैट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू, पहले कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जाएगा, और अगर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो ये पहले CHO में जाएगा और फिर ये COH बनाएगा। सेकेंडरी जो है दैट्स गोइंग टू फॉर्म योर कीटोन। हाउ डू यू राइट कीटोन? ठीक है, कीटोन बनाएगा। और टर्शरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, सो रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक्स और वाई आपका रिएक्ट करेगा, जेड रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो टर्शरी है, तो ये 2 ऑप्शन निकल गई। तो आई थिंक अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन में से तो निकाल ही सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। गिव सिस ट्रांस आइसोमर। अब चेक कर लें वाई और जी में सिस ट्रांस कौन देता है। सिस ट्रांस के लिए आई थिंक सी होगा, लेकिन लेट्स ट्राई मेकिंग दैट अप एज वेल। यानी कि पहले एल्कीन बनाना है, इसका OH यहाँ से निकलेगा और इसका एच जो है जहां से मर्जी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। सो CH3CH2C डबल बॉन्ड C। हाँ, तो आई थिंक ये बाय देगा, यस।
क्योंकि OH निकलेगा और इसके जो हमारे पास जो ये वाला हाइड्रोजन है बेसिक ये निकाल लेना, ठीक है। सो व्हेन यू रिमूव दैट, तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हो या इन दोनों के दरमियान में बना रहे हो, इन दोनों के कहीं से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों आपके बीटा कार्बन हैं, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू एंड अप विद द सेम थिंग, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास कायरल सेंटर बनेगा इन दिस केस और पार्ट नंबर सी के अंदर, ठीक है। चलें जी, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट MCQ नाउ। I need water. If you guys are listening, you need to have a glass of water because I'm thirsty. You should drink for me. Yeah. Oh, fun question. 37. अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव डन दैट। वो क्वेश्चन है ना, सारी स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, लेकिन एक चीज उसमें, यानी कि दो ऑप्शंस आपको बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, एंड समटाइम्स यू वर लुकिंग एंड यू लाइक कि व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विद बोथ द ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस आर सेम, बट एक आध बॉन्ड उन्होंने खाया होता है। तो आई थिंक वो एक था स्ट्रक्चर जिसके अंदर CN लगा हुआ था, नाइट्राइल आपका लगा हुआ था, और CN के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्होंने एक जगह पे डबल लगाया हुआ था, एक जगह ट्रिपल लगाया हुआ था। दैट एक्चुअली टुक मी अ मिनट टू फिगर आउट कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द क्वेश्चन इज व्हाई। अच्छा जी, compound X has stereoisomers and forms a precipitate when warmed with filling reagent. Okay. आपका 2,4-DNPH दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, फिलिंग आपका या टॉलरेंस आपका एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, आइडोफॉर्म आपके लिए मिथाइल कीटोन्स के लिए या सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। Compound X has stereoisomers and forms a precipitate when bonded with filling reagent. That means we are looking for an aldehyde, not a ketone. So let's exclude the ketone and solve the issue. So मुझे ये कीटोन नजर आ रहा है और मुझको ये भी कीटोन नजर आ रहा है, ठीक है। So you can easily work out by removing कि फेलिंग किसके साथ रिएक्ट करता है। फेलिंग आपको पता है, this is going to react with your CHO2. So it's either A or D, which structure could be compound X और स्टीरियोआइसोमर्स बना रहे। अच्छा जी, सो अगर मैं इसको देखूं 37 वाला जो 37 का जो ए पार्ट है, सॉरी, सो इफ आई राइट दैट डाउन, दिस इज CH3। आई होप दैट यू गाइस ऑल नो हाउ टू डिकोड दी स्केलेटन। ये मैंने नीचे बना दिया बॉन्ड ऊपर बनाने की बजाय। दिस इज डबल बॉन्ड CH2 and CHO, CH2 and CHO। क्या, हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। और अगर आप देखें तो ये आपका सिस्ट्रॉन्स नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए और इसमें आप क्या, हाँ, इसके अंदर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए आपके पास। ओके, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर देखूं ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर आई मीन वी डोंट इवन हैव अ कायरल हियर, डबल बॉन्ड के साथ कायरल नहीं होता क्योंकि, ठीक है। सो इसके अंदर नो कायरल। And if I look at this is CH3, CH2, CH2, CH. Then we have a branch CH3 and then we have CHO again. And by the looks of it, ये कायरल बन सकता है मेरा, खूबसूरत खूबसूरत चार अलग से, एक ही ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक एल्डिहाइड, बिल्कुल बन सकता है। So D is going to be the answer. ठीक है। Okay, guys, let's quickly move on. I was looking at this MCQ and I was like, अच्छा MCQ है, let's see कि हम वो MCQ proceed करते हैं। अच्छा, yes, अच्छा, कभी कभी you might see these compounds, इस तरह का क्वेश्चन 2-3 दफा आया पेपर के अंदर, that's why I added this question as well, कि कभी कभी आपके पास एक कंपाउंड है जिसकी एक साइड पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है और दूसरी साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, एंड दे कैन सेल्फ बॉन्ड टू ईच अदर। सो दिस इज वन ऑफ दैट कंपाउंड कि एक टर्मिनल पे मेरे पास या एक साइड पे दिस इज अ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली, ठीक है। एक आपको आप यू माइट हैव स्टडीड दैट देयर कुड बी कंपाउंड्स वेयर यू हैव टू फंक्शनल ग्रुप व्हिच कुड बी अटैच्ड टू दैट। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ कंपाउंड व्हिच इज देयर एज वेल।
अच्छा जी, चलो। So we have lacerite, which is an intermediate in the manufacture of synthetic fiber, which compound on heating with an acid catalyst can produce lacerite. Hydroxyethanoic acid, 2-hydroxybutanoic acid, 2-hydroxybutanoic acid. अच्छा, पहले let's see the carbon compounds which are going to help us in eliminating the structure. Okay, कौन से option निकल सकते हैं? So carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5 and 6. So एथेनोइक और ब्यूटेनोइक के अंदर 6 कार्बन तो नहीं है, ये तो मेरे निकल गए. प्रोपेनोइक एसिड, हाँ प्रोप हो सकता है, क्योंकि अगर अगर आप इसको इस तरीके से देखो, या अगर आप इस तरीके से देखो, सो इट कुड बी 3 कार्बन कंपाउंड ना, इधर 3 इधर 3. ब्यूटेनोइक में इसको 8 होने चाहिए थे. It should have 8 in the structure while we have 6 in the structure. Ethanoic means we should have 4 in the structures when it's self bonding with each other. ठीक है, चलें जी. हाइड्रोक्सी, अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में चेक करते हैं. प्लीज पे अटेंशन इन दिस केस, दिस इज अ वेरी फन एमसीक्यू. अच्छा, now when I look at lacerite and I can see that this is O and this is double bond O, that means I have an can open the structure. I could try for 2-hydroxy and 3-hydroxy. के hydroxy को मेरा किधर लगाना है? So if I do that for the first one, CH3 ये वाला, then I have COH, C के साथ OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, यहाँ पे H और तीसरे के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट, this is 2-hydroxy propanoic acid. ठीक है, अब I'm going to do the structure, write the same structure, I'm going to invert that structure up. And when I do that, what I'm going to do is I'm going to try to move it. So this is going to be C double bond O, OH, C, OH. Sorry, ये कार्बन दरमियान में टेढ़ा बनाना, उल्टा बनाना basically. C, OH and H and CH3. ठीक है, let's use the colors. अच्छा, अब यानी कि डबल बॉन्ड O एंड एस्टर लिंकेज बनाने के लिए हमें यहाँ से OH चाहिए होता है और यहाँ से हमें H चाहिए होता है. दिस इज 1 and the second one should have been H यहाँ से और OH यहाँ से. And if I make the structure, मेरे पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा जैसे यहाँ पे. If I combine them up, so this is CH3 at the terminal, then I have carbon which has 1 hydrogen which is there, and I have 1 oxygen here, and this is again bonded to the carbon which has again oxygen which is there, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ रहा है, नहीं ऑपोजिट बना दिए मैंने, सॉरी. You getting my point कि यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर है, when I combine this together, so ये CH3, if I just use this one, ये CH3 है. Oops, sorry. Let's go back. We don't need this part. ये क्या हुआ? पता नहीं मैंने क्या किया. Sorry guys. लेकिन let's try for the next one. मेरा ख्याल में MCQ ऊपर चला गया. Yeah. Last one's MCQ says sorry about that. हाँ ये बना देते ना. Okay. I was trying to look for the highlighter actually. Sorry about that. अच्छा, तो 2-hydroxy and 3-hydroxy हम बना रहे थे, तो 2-hydroxy हम ट्राई कर रहे थे. So let's complete the 2-hydroxy one first. So मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है 2-hydroxy का, तो I have CH3 which is there, then I have C, I have OH which is attached with it, then I have C double bond O and OH. ठीक है, और थर्ड में
I have, मैं इसी को इसी तरीके से लिखती हूँ. That's very hard for me to write. यानी कि C double bond O OH C H and OH and this is CH3. Sorry, मेरे कार्बन्स आपस में नाराज हो गए. Something of that sort. ठीक है. And if you look at the structure now, तो ये वाला H जो है ये इस OH के साथ बॉन्ड करके ये वाला आपका एक बॉन्ड बना देगा और ये वाला H इस OH के साथ बॉन्ड करके एक बॉन्ड बना देगा. ठीक है. And the resulting structure is going to be something of this sort. CH3 बाहर है स्ट्रक्चर से. Then I have carbon which has one oxygen and it has one hydrogen. ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है ये वाला. ठीक है. And then I have इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला भी मेरे पास लगा हुआ है. ये कार्बन है, ये वाला कार्बन एंड ये वाला डबल बॉन्ड. सो ये वाला कार्बन एंड ये वाला डबल बॉन्ड. तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यही स्ट्रक्चर मेरा दोबारा रिपीट होगा. सो ये CH3 ये वाला CH3 है. ये टर्मिनल वाला. It is hard to make the structure, but I hope that you guys getting a hang of it. ये O है मेरे पास. And this O is then bonded with another carbon, which has an H. This is again a CH3, which is there, which is this CH3, and this is then bonded with this. Okay, so this is how the compound can self bond with each other. It's hard to make this. So this is 2-hydroxy. अगर 3 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास जो bond है उसकी position अलग से बनेगी. ठीक है. So it's not 3-hydroxy. It's going to be 2-hydroxy. अच्छा जी. Second last MCQ I think, and then I'm going to wrap this up as well. Okay, जी. I don't know, there is some glitch and there were, I told you guys before as well, I could not access the chat button. I would have loved to talk to you guys and love to see you guys ask me questions and all. I don't know why the chat is disabled or whatever. Okay, so the diagram shows the relative abundance of different isotopes of lead in a sample of lead ore. The abundance is of 208 is half of that of 206. The abundance of 208 and 209 are equal. Okay, so अच्छा उन्होंने मुझे ये ग्राफ बना के दे दिया. सो आई थिंक आई कुड यूज दिस ग्राफ इन ऑर्डर टू यूज दिस वन. सो 208 की जो अबंडेंस है दैट इज 25% और जो इसकी अबंडेंस है दैट इज 50%. 20 the abundance of 208 is half of that of 206. 208 की abundance अगर ये 50 है तो वो 25 है. The abundance of 208 and 209 are equal. ठीक है. तो 209 की abundance उतनी ही है जितनी 206 की है. तो we simply have to find the AR. You know that percentage mass, mass multiplied by the abundance divided by the total percentage. So 208 times 25 plus 209 times 25 again, plus 206 times 50. And 25 is 50 and 50. कभी-कभी हमारे पास percentage does not add up to 100 as well. So please do double check कि आपकी percentages 100 add up हो रही या नहीं. So this is going to give me 207.25 is the answer. So answer is going to be B in this case. ठीक हो गया. All right, guys. Chale, let's quickly move to the next MCQ. I said that we are going to do a couple of more MCQs. Let me just skip the easy ones. But the questions which I've picked up are the ones which I feel that the students have trouble in. Let's quickly go through as many as we can. So ताकि आप लोगों का फायदा भी हो जाए. Oh yes, this you will be like her and you देख excited हो जाती है.
Yes, when I have spent so much time looking at that MCQ ना, तो जब मैं उसको समझा रही होती तो मुझे अंदर से excitement आ रही होती कि oh, this is a fun question. The students are going to enjoy and they will learn something from this. So that's why I get sometimes excited about that. कि यार चलो कोई नया कॉन्सेप्ट है, कुछ अच्छी चीज सीखने को या सिखाने को मिल रही है. So that is what gets me, a little too excited at times. चले, let's get this rolling. Acha ji. So we have an ionic equation which shows iodine ions reacting with manganate 7 ions in acidic solution. Now this question is a redox balancing equation, which we don't like. We don't like redox balancing, right? I said the trick is that many people got this question wrong. मैं सही question निकाला है? हाँ, सही निकाला है. Okay. Many people got this question wrong was because they are asking whole number और हम decimal में भी balancing करते थे, ठीक है? So this is the remember, and instead of looking at this equation and thinking कि अच्छा इसका वहाँ पे electron जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, I would suggest to balance the equation yourself. Literally, that takes just 2 to 3 minutes. You know how to balance the redox equation, and I personally love the balancing using the oxidation states. Electrons gets a little confusing at times, but you can use both of them. But sometimes electrons ones are going to be applied और वहां पे आपकी वो दूसरी वाली नहीं चल पाती, ठीक है? So yes. Let's start with balancing. When we talk about the redox balancing, how do we start with the balancing off as well? So I'm starting with MnO4 minus, which is going to give me Mn2 plus. ठीक है? अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है. That means that I need to add water to this side. And how many water do I need to add? Because I have 4 oxygens. तो मुझे यहाँ पे 4 पानी के molecules डालने पड़ेंगे. मैंने यहाँ पे 4 water molecules डाल दिए हैं. That means I will have to add hydrogen to this side, and I'm going to add 8 hydrogens to this side. Space constraint, guys. ठीक है? Now the second, so हम लोगों ने पहले equation देखी. Then we have to look कि कौन सी side पे हमारे पास water add हुआ है. अगर ऑक्सीजन इस साइड पे है तो वाटर ऑपोजिट साइड पर डालेंगे. वाटर डालने की वजह से वी गोइंग टू हैव हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू बी एडेड टू द नेक्स्ट साइड. नाउ बैलेंसिंग ऑफ द चार्जेस. So we have 8 plus and 1 minus. So we have a net charge of 8 plus and 1 minus in this case, and we have a 2 plus charge here. तो यहाँ पे मेरे पास 2 plus charge है और यहाँ पे मेरे पास 8 and -1. तो मेरे पास यहाँ पे +7 का चार्ज है, ठीक है? चार्जिंग प्लीज चार्जेस को देख लीजिएगा. तो मैंने +7 को +2 बनाना है. सो आई एम गोइंग टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स टू दिस, ठीक है? ताकि +7 + 5 इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू गिव अ +2 चार्ज ऑन बोथ साइड्स. ये मेरी इक्वेशन हाफ डन हो गई है. अब मुझे यहाँ पे एक आयोडीन नामी चीज भी नजर आ रही है और I2 भी नजर आ रहा है. लेट्स राइट दैट डाउन एज वेल. सो I- इज कन्वर्टेड टू I2, एंड this is simple enough क्योंकि iodide ion ने iodine बना दिया है. So I'm just going to add 2 here, and when I add 2 here, मेरे पास जो element है वो balance हो गया. Now I'm going to look at the electrons. So यहाँ पे मेरे पास -2 का चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास चार्जेस नहीं है. So I'm going to add 2 electrons to this side. नहीं, sorry, वहाँ पे 0 चार्ज है. सॉरी, -2 है तो यहाँ पर -2 चार्ज है. हाँ, yes, 2 minus के अंदर I can add 2 electrons in this case. Where's my pen? Yeah. So 2I plus 2E minus, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना? या अदर वे राउंड भी डाल सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास -2 चार्ज है तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल, ठीक है? Yeah. अच्छा जी. अब the problem here is that the number of electrons are not equal. What we have to do is we have to balance the electrons. ये 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अब I'm going to multiply because electrons need to be cancelled in a redox reaction, and I'm going to make them 10, both of them 10. So I'm going to multiply this equation with the 2, and when I do that, I'm going to be very cautious. I'm going to have 2MnO4 minus plus 16H plus 10E minus is going to give me 2Mn2 plus 8H2. This is this side of equation.
और यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बिकम, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से टू मेक 10. So this is going to be 5i minus is going to give me 5i2 plus 10e minus. अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइडों पे कैंसिल करती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एंड लेट्स राइट दीस इक्वेशंस टुगेदर. So I'm going to have Mn 2MnO4 माइनस, यानी कि रिएक्टेंट साइड को सारा अडप कर रही हूँ और प्रोडक्ट साइड को सारा अडप कर रही हूँ. 16H पॉजिटिव प्लस 5I माइनस is going to give us 5I2 plus 2Mn2 plus 8H2O. So यहाँ पर ये जो X की, Y की, Z की, W की, V की सारी वैल्यूज थी, ये मैंने सारी निकाल दी आपके लिए. See how kind I am. So उसने होल नंबर पूछा हुआ था और उसने हमसे पूछा हुआ था कि 2 और मोर, उसने हमसे V की वैल्यू पूछी थी और V हमारे पास जो था वो क्या था, V हमारे पास था H पॉजिटिव. ठीक है, V पूछा हुआ था, V हमारे पास क्या था, H पॉजिटिव, ये, और H पॉजिटिव हमारे पास क्या आया 16. So answer is going to be D. See, it was a good question. So I hope you all understand how to balance the redox equations now. Next question, आसान है, so I think skip that question and let's move to something more, challenging for you guys. Next हमारे पास वो PV is equal to nRT वाला लग रहा है. हाँ, आइडियल गैस है. Yes. Sometimes what happens, that you think that, okay, you're not going to use this apparatus again, and then you are, that apparatus which you think that is not going to be utilized is going to come to your aid. That is what is happening to me now. So yes, alhamdulillah for that. Let's get this rolling. So we have, I think everybody understand the Pauling scale. As a Pauling scale ka, I was going through the syllabus that day. उन्होंने syllabus में नाम दिया है Pauling scale का. So I hope everybody understand what is a Pauling scale. Electronegativity का जो. Next question. 12th MCQ is good. Let's do the 12th MCQ. Many people were stuck in this MCQ. So let's do this MCQ. ठीक है? अच्छा. Enthalpy change for neutralization of HNO3 and NaOH is minus 57 kilojoules per mole. In an experiment, 20 centimeter cube of 4 mole per dm cube HNO3 is mixed with 30 centimeter cube of 2 mole per dm cube NaOH in an insulated container. If you want to take a breather, so go ahead and do that, and remember to have some water. The initial temperature of both solution is 25 degrees Celsius. मेरे पास HNO3 है और मेरे पास NaOH है. ठीक है. It can be assumed यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और उसकी डेल्टा एच की वैल्यू इज -57. इट कैन बी अज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर इज 4.2 joules per centimeter cube per centigrade and that there are no heat losses. What is the maximum final temperature of the mixture? Okay, चलें जी, let's do this question. So अगर मैं देखूं number of moles, इसके जब मैं निकालती हूँ 20 times 4 divided by 1000, it comes out to be 0.08, and 30 times 2 is 60.06. और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ balanced, HNO3 plus NaOH is going to give me NaNO3 plus H2O. So I think this equation is already balanced. तो अगर आप देखो तो ये मेरे पास 0.08 है और ये मेरे पास 0.06 है. That means मेरे पास जो मोल रेशियो that is 1:1. तो अगर मेरे पास 0.08 इसके हैं तो इसके भी मेरे पास 0.08 होने चाहिए. That means this is going to be my limiting reactant and this is going to be my excess reactant. ठीक है, क्योंकि 1:1 है. तो अगर मेरे पास HNO3 के 0.08 थे तो मेरे पास NaOH के भी 0.06 होने चाहिए थे. तो लिमिटिंग कौन सा हो गया? हो गया. Now let's look at the delta H data. So delta H का डेटा जो हमारे पास given है, that is, अब delta H में you remember this formula Q over N. So we are going to use this. So delta H into N equals to minus Q in this case.
and we are given the value which is -57. और यहाँ पे the student got confused कि हम moles किससे use करेंगे, ठीक है? So that is why I told you limiting reactant आपको पता है हम use करते हैं. Number of moles for the limiting reactant is going to be utilized, which is NaOH in this case. And this is going to give me -57 times 0.06. It's giving me 3.42 जूल्स पर किलो पर मोल, ठीक है? अब हमारे पास 3.42 वैल्यू आ गई किसकी? Q की, ठीक है? You have the value 3.42 is kilojoules per mole, ठीक है? और जब आपने डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमने डीप ट्रैक किया क्वेश्चन को, हमें क्यू भी नहीं था हमारे पास, पहले हम क्यू से डेल्टा एच निकालते थे और टेम्परेचर वाला क्वेश्चन बहुत कम आया पेपर में, ठीक है? सो अब हम Q is equal to MC delta T लगाएंगे. And when we do that, we are going to have Q की value is in joules, and I'm going to convert this value to 3420 joules. वो किलो जूल्स है तो मैंने उसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया. That is 3420 joules. मास मेरे पास 20 इसका और 30 इसका. हम मास की बजाय वॉल्यूम भी लेते हैं फॉर सॉल्यूशंस. सो दिस इज गोइंग टू बी 50. सी की वैल्यूज ने मुझे दी हुई है 4.2 एंड डेल्टा टी, ठीक है? सो 50 times 4.2 is 210, 3420 into delta T. 3420 divided by answer 16.28 this. और उसने मुझे कहा हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन वाज 25, और इसके अंदर अगर मैं 25 ऐड कर दूं plus 25, that's going to give me 41.2 degrees Celsius. That means around 41.28 है, so 41.3, ठीक है? चलें जी, that's all. I hope you guys had a good revision. There are a few MCQs which I would want to go further on, but I think that should be it. I am again really sorry that my chat was not functioning, my system, and I was late as well. So I'm really sorry about that. I hope you guys have, and inshallah the next session is going to be better than this. Okay, so good luck with your exam, and do let me know that if you guys need some help, I'll try to help you out with those MCQs, inshallah. Okay, you can reach out to me and let me know if you guys need further help. That's all for today, guys, and take care.